नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशरफ चौधरी। आप देख रहे हैं CN TV और सुन रहे हैं रेडियो ओस्लो इमिग्रेंट्स कल्चरल रेडियो। नॉर्वे में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सफ़ातना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यौम इकबाल यानी बज़्म इकबाल के नाम से तकरीब मुनक़्क़द की गई, जो कि नॉर्वे की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा सफ़ातना पाकिस्तान की जानिब से बज़्म इकबाल का एहतमाम किया गया था। अगर मैं गलत नहीं तो ये खबर ठीक है, क्योंकि ऐसे मैंने कभी सुना नहीं था। और प्राइवेट तंजीमें करती है, अपने इस्लामाबाद वाले करती हैं या कदबी तंजीमें हैं वो कभी करती हैं, लेकिन सफ़ातना पाकिस्तान की जानिब से एक अच्छे तरीके से आसान अंदाज में, जैसे सरकारी सतह पर नहीं होता, जैसे पाकिस्तान में कन्वेंशन सेंटर में होती हैं प्रोग्राम सरकारी, सेम उसी तर्ज पर सफ़ातना पाकिस्तान ने एक ओस्लो कंसर्ट हाउस में एक आला तकरीब का इनकाद किया। इसकी हम रिपोर्ट पर दिखा चुके हैं और अब मैं मुस्तफ़िल रिपोर्ट देने लगा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि सफ़ीर मोहतरम जो कि अदब शनास हैं, मोहतरमा से सादियात आपका साहबा कि क्या किसी कतीर देव की जाए, यकीन जाने उनका हर स्टेप, हर कदम, हर सोच तारीफ़ काबिल तहसीन है। वो सोचती हैं तो पाकिस्तान, बात करती हैं तो कम्युनिटी, तो इस लिहाज से उनका हर लम्हा पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए होता है। वो उनकी केयर करती हैं, एक माँ की तर्ज पर वो ख्याल करती हैं, और किसी को कोई शिकायत मेरे ख्याल में नहीं आज तक पहुँची कि सफ़ातना पाकिस्तान की जानिब से कोई शिकायत हुई हो। अगर कोई शिकायत कोई हो भी तो सफ़ीर मोहतरमा बड़े प्यार से, बड़े आसान अंदाज में उसके हल करने में फाजली का मुजाहरा करती हैं, कभी उनको गुस्सा नहीं आता। कि मुलाजमीन अफसरान का भी शुक्रिया अदा किया, उसमें सरफरिस्त सलीम नियाजी साहब जो कि डिप्टी हेड मिशन हैं, और वेलफेयर काउंसलर मोहम्मद फराज साहब, उन सब का उन्होंने जिक्र किया और तारीफ़ की। बाकी का भी नाम लेके फर्दन साहब का शुक्रिया अदा किया, और उस कम्युनिटी के कुछ लोगों का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनका ताउन उन्होंने इस सिलसिले में किया। तो इसके बाद उन्होंने तकरीब के बाद जो लोगों से मुलाकात भी की। आप देख रहे हैं कितनी खुश नज़र आ रही हैं, वाकई खुश क्यों ना हूँ, क्योंकि तकरीब बड़ी कामयाब थी। तो फिर उस तरह उन्होंने जो ख़ताब किया, मैं वो भी सुनाता हूँ आपको, वो भी देख पाएंगे। लेकिन आइए देखिए, फ़ोटो देखिए किस तरीके से खुश हो रही हैं। तो इस तरह से मैं भी मुबारकबाद देता हूँ रेडियो ओस्लो, CN TV भी मोहतरमा सादियात आपका साहबा को मुबारकबाद देते हैं। आपका ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अब ये आइंदा ऐसे हर सफ़ातना पाकिस्तान में जो भी सफ़ीर आएंगे वो ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। होना चाहिए, इससे पाकिस्तानी कम्युनिटी को, नई हमारी नस्ल को पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी शोरा के बारे में इल्म होता है, आगाही होनी ज़रूरी है। तो ये चाहते हैं, देखिए मैडम ने, मोहतरमा साहबा ने क्या कहा। दोबारा से अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, Gukwen. Thank you indeed for sitting longer than the given time and enjoying this evening. What I am going to say that is coming from my heart. When I had this idea that let's have an Iqbal evening here in this city, where the third and fourth generation of Pakistani diaspora, they have grown, and credit goes to their parents that they have kept Pakistan alive in them. So they are connected to their roots. Farooq Qureshi, he is in front of us. When he was invited by His Majesty the King after his election to the Storting, and he went there clad in Sherwani. And he proudly sent me that message, that today I went to the royal palace clad in Sherwani to honor my roots. So if we have this bridge between Pakistan and Norway, this third and fourth generation now in leadership roles,
Here we had a doctor, Dr. Iqbal. They say every 10th doctor in OSLO is of Pakistan, I'm proud of us. The engineer, doesn't just explore oil, he explores the soul. And with this vibrant diaspora, I felt a duty as ambassador of Pakistan that the ideological roots of Pakistan, the ideological heritage of Pakistan, that should be introduced to them. The idea of Pakistan should be introduced to them. And the idea came from the poet philosopher Allama Iqbal, whose vision, whose thoughts, whose concepts of selfhood, whose concept of Shaheen, they are my guiding principle. So I thought that the youth, although I'm not young, but I want to be, so with you, I wanted that youth also have that connection with those ideas which are helping me in steering the way. So perhaps with this long evening, with the words of wisdom coming from Sufi Saab, every word, perhaps I didn't understand the meaning of that verse which you explained it so well. With those words of wisdom, Professor Chawla, you came all the way along from Pakistan. And in my vote of thanks, I must thank Mr. Shahnawaz Tarar, who is my husband, but he is a historian in his own capacity, taught by Professor Chawla. And when he told me that Professor Chawla will be in town and will be going back on 9th of November, so I thought that idea of connecting youth here with Iqbal, and so I thought then we should await Professor Chawla's presence. And then different ideas started coming to me, and here Amir Javed Sheikh helped me bringing Munib Iqbal's message, Neha helped me bring Iqbal Salahuddin's message, and our writer, Norwegian Pakistani writer Khalid Mahmood is sitting here. We didn't involve him as such, but perhaps his one previous day's Facebook post when he wrote something about Khudi, those were the days when I was having this idea of how this concept of Khudi should be introduced to the youth here, and that's how when we contacted concert hosts, so they said only 4th November is the available date. So that was good. Professor Chawla was here and we could put together. Then I contacted Neha and Nasir, and luckily we could have their availability of both despite their busy agenda. And they took up that responsibility of being the masters of ceremony. And in my team, then Faraz, our counselor, he really helped me. I didn't engage my other 2 officers in the beginning, but when I engaged them towards the end of the program, they really helped me quintessentially. And then the sports staff, of which I would particularly name Hidayat and Jasmine and Zakir, who is now in Pakistan, but the idea when it was in my mind, so he helped materialize it since the beginning. So with those vote of thanks, then I must say thank you to Shahnaz Fatima, the lady, and Abida Evan, who is I think sitting here if has not gone, yeah. So they, and Usman Dhillon. This tableau of the children, although their pixel quality of the movie wasn't good, but I was insistent that I must show it to the audience because those are our children. Those are children of Oslo, Pakistani origin children who were rendering Iqbal's vision, Iqbal poet, the type of youth Iqbal wants. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अल्लाह करे कि आप सब लोग एक शम्मा बने, नॉर्वे आप पे प्राउड हो जिस तरह हम आप पे प्राउड हैं।
Long live Pakistan, long live Norway, long live Pakistani Norwegian diaspora, long live Pakistani Norwegian friendship. If Anne Lilleroy is there, so you take this message also from me to Foreign Office.